Namaskar, good evening viewers. You're watching House Highlights on Sansad TV. The second day of the monsoon session again witnessed disruptions and both the houses could not function smoothly. In this program, we look at the highlights of Friday's proceedings. I'm your host Rajiv Kumar. Let us first take a look at the headlines. Both houses of parliament adjourned after disruption. Government says willing to discuss all issues on the floor of the house. Chairman apprises members of Business Advisory Committee decisions regarding the allocation of time for government business. House to take up detailed discussions. Upper House conducts a formal business. Members raise matters of public interest. Let us now take a look at the proceedings in the lower house. The second day of the monsoon session again witnessed constant interruptions by the opposition. The day began with the Speaker Om Birla calling for a question hour to begin. However, as the sloganeering continued, the Speaker appealed for the members to let the House function smoothly. माननीय सदस्यगण, मैंने स्थगन पर कोई व्यवस्था दी है क्या? प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते। माननीय सदस्यगण, सभी माननीय सांसद चाहते हैं सदन चले। क्या नारेबाजी से समस्याओं का समाधान होगा? क्या समाधान होगा? चर्चा संवाद से, चर्चा होगा बातचीत से। ये तरीका उचित नहीं है। Defence Minister Rajnath Singh today put the government's view on the Manipur issue. Rajnath Singh said the Prime Minister had himself condemned the incident and opposition was indulged in just politicizing the issue rather than having a serious discussion. अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही इस बात को कहा है, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सचमुच यह प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है और अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए इस पर चर्चा होनी चाहिए। फिर से मैं अपनी इस बात को दोहराना चाहता हूं और मणिपुर की घटना को प्रतिपक्ष भी गंभीरतापूर्वक ले। Opposition members were not satisfied with Rajnath Singh's observations and continued interrupting the proceedings. As the opposition continued their sloganeering, the Speaker adjourned the House till 12 noon. आप वाद-विवाद नहीं करना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, आप देश की जनता चाहती है सदन चले, मुद्दों पे चर्चा होगी, उससे समाधान होगा, नारेबाजी से समाधान नहीं होगा। सरकार तैयार है चर्चा के लिए, आप तैयार नहीं हो, सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। After the House reassembled at 12 noon, Rajendra Agrawal chaired the proceedings in the Lok Sabha. Important papers related to the business were laid on the table. Minister of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal then laid the proposed business for the lower house for the week beginning Monday. I rise to announce that government business during the week commencing Monday, the 24th of July 2023 will consist of, number 1, consideration of any item of the government business carried over from today's order paper. It contains consideration and passing of the Biological Diversity Amendment Bill 2022. Number 2, consideration and passing of the following bill. Number 1,
the Multi-State Cooperative Society Amendment Bill 2022 as reported by Joint Committee, and second, the Forest Conservation Amendment Bill 2023 as reported by Joint Committee. Number third, consideration and passing of the following bills after their introduction: the National Nursing and Midwifery Commissions Bill 2023, the National Dental Commission Bill 2023, the Constitutional Scheduled Caste Order Amendment Bill 2023, and the Registration and Birth and Death Amendment Bill 2023. Item number 4, consideration and passing of the Cinematograph Amendment Bill 2023 after it is passed by Rajya Sabha. Member Kamlesh Paswan moved a motion for the selection of a member to the remaining period of Estimates Committee in place of Girish Balchandra Bapat. The motion was passed by a voice vote. नियम 254 के उपनियम 3 द्वारा अपेक्षित रीति से श्री गिरीश बालचंद बापट, जिनका निधन 29 मार्च 2023 को हुआ था, के स्थान पर प्राक्कलन समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें। बहुत बढ़िया। प्रश्न है कि श्री कमलेश पासवान जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। BJP member Satyapal Singh then brought up a motion related to Committee on Public Accounts after the retirement of Rajya Sabha member Sukhendu Shekhar Rai. आपकी अनुमति से मैं इस सीट से बोलना चाह रहा हूं। Sir, I rise to move that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate one member from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts of the House for the unexpired portion of the term of the committee by Shri Sukhendu Shekhar Rai, retiring from Rajya Sabha, and do communicate to this House the name of the member so nominated by Rajya Sabha. Thank you, sir. है कि श्री सत्यपाल सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। Kirit Solanki's motion relating to SC/ST committee caused due to the death of Lok Sabha member Ratan Lal Kataria too was passed by a voice vote. मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 331 ख के उपनियम 1 के साथ पठित नियम 254 के उपनियम 3 द्वारा अपेक्षित रीति से अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए श्री रतनलाल कटारिया जी, जिनका निधन 18 मई 2023 को हुआ था, उनके स्थान पर समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें। है कि डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। Rajesh Verma brought a motion related to the Committee for the Welfare of OBCs. The House needs to select 20 members for the committee. प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं कि सभा द्वारा 24/6/2019 को स्वीकृत प्रस्ताव के क्रम संख्या 7 के पैरा 3 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए उक्त समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करें। वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। Amit Din, the chair, again appealed for the members to go to their seats as the government was ready to have discussion on the Manipur issue.
संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि चर्चा करने लगे तैयार हैं। आज सदन के उपनेता माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी इसका अनुरोध किया है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है, मेरा निवेदन है, कृपया करके अपनी सीट पर वापस जाएं ताकि चर्चा हो सके। ये बहुत महत्वपूर्ण सेंसिटिव इशू है, सदन में चर्चा होनी चाहिए। आप चाहते हैं, प्लीज प्लीज। Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi on Friday to appeal the opposition members to let the House function as the government was ready to have discussion on the Manipur issue. However, the opposition was in no mood to relent and the House was adjourned for the day. और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। हमने बार-बार ये बोला है, माननीय राजनाथ सिंह जी आज सुबह भी बोला है, मणिपुर एक संवेदनशील मामला है। It is not sensitive issue and we are equally concerned about it. Entire country and entire house is concerned about it. हम चर्चा करना चाहते हैं, तो ये लोग चर्चा करना नहीं चाहते हैं। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 24 जुलाई 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Time for a very short break in the bulletin. News from the upper house on the other side. सबसे ज़्यादा प्यारा अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे लिए है कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी, जिसके अंदर हमने हमारी कोशिश करी खूबसूरत बनाने की। उसके अंदर पत्थर और मार्बल दोनों आर्किटेक्चरल तरीके से कर्व बन के लगा हुआ है। उसके साथ में हमारा भारत का संविधान रखा है। उससे बढ़ के हमारे लिए और कुछ नहीं। In the upper house, the proceedings were stalled on Friday. The House, however, conducted formal business. Ministers tabled papers pertaining to various ministries. Papers to be laid on the table, Shri Ashwini Kumar Chobe. से मैं आज की संशोधित कार्यावली में क्रम संख्या 1 को पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित कागजात को सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। श्रीमती साध्वी निरंजन ज्योति। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आई करेक्ट माई सेल्फ, साध्वी निरंजन ज्योति। श्रीमती अनुप्रिया पटेल। Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 2C in the revised list of business for today. कुमारी शोभा कारंद लाजे। माननीय सभापति जी,
मैं आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या ढ पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखती हूँ। Several reports of the department-related parliamentary standing committees were also presented. Report of Department-related Parliamentary Standing Committee on Defence, Lieutenant General Dr. D.P. Watts, retired. Honorable Chairman, I rise to lay a copy of the 39th report, the Inter-Services Organizations Command, Control and Discipline Bill 2023, approved by Standing Committee on Defence as listed against my name in today's list of business. Thank you. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing, Sri Kailash Soni. श्रीमती रामीला बेन बेचार भाई बारा। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपकी अनुमति से आज के कार्यसूची में क्रम संख्या 3ख पर मेरे नाम के सन्मुख यथा सूचीबद्ध कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 57 में और 58 में प्रतिवेदनों हिंदी अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल रखती हूँ। थैंक्स। Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development, श्री विजय पाल सिंह तोमर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने नाम के सम्मुख अंकित विभाग संबंधित श्रम, वस्त्र, कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। नंबर 1, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कार्यान्वयन के संबंध में समिति के 36वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधित 44वां प्रतिवेदन। नंबर 2, वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मानव निर्मित फाइबर का विकास के संबंध में समिति के 37वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधित 45वां प्रतिवेदन। नंबर 3, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदान मांगों 2023-24 के संबंध में समिति के 41वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 46वां प्रतिवेदन। नंबर 4, वस्त्र मंत्रालय की अनुदान मांगों 23-24 के संबंध में समिति के 42वें प्रतिवेदन 7वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधित 47वां प्रतिवेदन। और नंबर 5, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अनुदान मांगों 2023-24 के संबंध में समिति के 43वें प्रतिवेदन 7वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 48वां प्रतिवेदन। Chairman Jagdeep Dhankar apprised the members on Friday about the decisions taken in the Business Advisory Committee. The House will take up detailed discussions on various bills and statutory resolutions moved by the members. I have to inform honorable members that the Business Advisory Committee in its meeting held yesterday, the 20th of July 2023, has allotted time for government, legislative and other business as follows. 1. Statutory resolution seeking disapproval of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023 promulgated by the President of India on 19th of May 2023. Chairman Jagdeep Dhankar asserted that the members of the upper house must strive to be role model for other theatres of legislation. He exhorted the members to exemplify their conduct for emulation by others. I give time to everyone in accordance with rules. This house is the upper house. This house is the house of elders. Our conduct is being watched
by more than 1.3 billion people. We have to exemplify our conduct so that we can be appreciated. Chairman Dhankar asserted that the members of the upper house must strive to be a role model for other theatres of legislation. He exhorted the members to exemplify their conduct for emulation by others. I give time to everyone in accordance with rules. This house is the upper house. This house is the house of elders. Our conduct is being watched by more than 1.3 billion people. We have to exemplify our conduct so that we can be appreciated. Chairman Jagdeep Dhankar on Friday gave a very important ruling on point of order whether a matter sub judice can be raised on the floor of the House or not. Chairman clarified that every issue on the planet can be discussed in Parliament. He corroborated his stance by constitutional provisions. Article 121 states that no discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or a High Court in the discharge of his duties, except upon a motion for presenting an address to the President praying for the removal of judge as hereinafter provided. The entire country has to be enlightened by us. The entire country has to get our message. What does the Constitution say on this? There is a constitutional prescription that puts a bar on discussion in the House in a very qualified manner. I had the occasion to give my ruling on a point of order that this House is entitled to discuss everything under the planet with one restriction, and that restriction, honorable members, is germane to the issue Dr. Keshav raised, and that is Article 121. It is for this House to generate light all around. It is for this House to clear the confusion, to clear the cloudy weather. And Article 121 says restriction on discussion in Parliament. Am I clear, sir? So the only restriction generated in the Parliament has been given to us by our founding fathers, and that is no discussion. No discussion. Raghav Chadha, listen to it. You need to understand. No discussion, honorable members, no discussion shall take place in Parliament. No discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of the High Court in the discharge of his duties, and that is also restricted. That can also be done, but there is another method, and that is except upon a motion for presenting address to the President praying for removal of the judge as hereinafter provided. Honorable member, one second. Let me conclude first. Let me conclude. Therefore, the concept of sub judice is totally misconceived. The upper house on Friday extended birthday greetings to leader of opposition Mallikarjun Kharge and member Joginapalli's Santosh Kumar. Chairman lauded the contribution of these members in public life. Chairman also apprised the House that leader of opposition met him in the chamber before leaving for Karnataka. Honorable members, birthday greetings. I take the opportunity to wish birthday greetings to the Honorable Leader of Opposition, Sri Mallikarjun Kharge, member of this August House since June 2020. Sri Kharge had been Union Cabinet Minister, member of Lok Sabha 2 terms, Minister in Government of Karnataka, and has been a member of Karnataka Legislative Assembly for 9 terms from 1972 to 2009.
The House has witnessed his wit and humor, and I have also tasted the same. खड़गे जी का ह्यूमर सताते हुए मौसम को बदल देता है. Once again, I wish him a very happy birthday on behalf of the entire House. May he be ever blessed. Honorable members, I take the opportunity to wish birthday greetings to Honorable Member of Parliament, Sri Joginapalli Santosh Kumar. Member of this House since April 2018. He is known for his Green India Challenge, and he also figures in Limca Book of Records for record number of saplings with participation of over 16,000 people in Adilabad. On my own and your behalf, I wish him long and happy life. Rajya Sabha witnessed wit and humor as Chairman Dhankar sought to use occasional laughter as the best medicine in the House. Raghav, take your seat. Just one second, Raghav. Is something wrong with your seat? Every time you jump. With this, we come to the end of the House highlights. For daily updates, keep watching Sansad TV. Good night.